Hello everyone, my BL Sharma Maths sir discussing exercise 6.2 chapter 6 triangles of uh, class 10th mathematics, and these questions are from NCERT book, and in this figure it is given that DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR in this figure, and we have to prove that this EF is parallel to QR. किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल दे रखा है किसी वन साइड के, तो दैट पैरेलल लाइन विल डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मींस वी हैव टू यूज हियर द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जब हमें पैरेलल प्रूव करना हो तो हमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना होगा। तो सी हियर व्हाट इज गिवन इन द फिगर इन ट्राइंगल PQO. DE is parallel to OQ, it is given, and in second in triangle POR, DF is parallel to OR, and we have to prove that EF is parallel to QR. Proof C, in triangle PQO, DE is parallel to OQ. ये given है. So using the basic proportionality theorem or Thales theorem, we can say that PD, this upon DO, that is PE upon EQ. Similarly, again in the other triangle POR, DF, this DF is parallel to OR. So using again basic proportionality theorem, we can write PD upon DO, that is PF upon FR. But now we see that PD upon DO here and here in by first and second, PD upon DO, this is PD upon DO. So left hand side is same, so right hand side is also same. So considering first and second, PE upon EQ will be equal to PF upon FR. This PE upon EQ is equal to PF upon FR. हमें पता है कि जब किसी ट्राइंगल में कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, PE अपॉन EQ, दैट इज PF अपॉन FR. सो दिस लाइन will be parallel to this line by converse of basic proportionality theorem. Hence proved. Question number 6, in the figure, A, B, C are the points on the side PO, OQ, and OR respectively, such that this line AB is parallel to PQ and this AC is parallel to PR, and we have to prove that BC is parallel to QR. We have to prove that this BC is parallel to QR. जब हमें किसी लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा तो हमें कन्वर्स ऑफ BPT मींस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब कोई लाइन पैरेलल गिवन होती है तो हम उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सी what is given in the figure in triangle OPQ, AB is parallel to PQ, and in the other triangle OPR, AC is parallel to PR. Now, to prove BC is parallel to QR, see the proof. Triangle OPQ में AB is parallel to PQ, so we can say by applying the basic proportionality theorem, we can say that OA upon AP, that will be equal to OB upon BQ. And in the other triangle OPR, AC is parallel to PR. That is why again OA upon AP
इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब आप यहां पे देखेंगे दैट ओ ए अपॉन ओ पी एंड दिस इज ऑल्सो ओ ए अपॉन ओ ए पी. This is OA upon AP and this is also A upon AP. Left hand side is same, so right hand side will also be same. So we can write that OB upon BQ is equal to OC upon CR. So see here now, this upon this is equal to this upon this. ये जो BC लाइन है ट्राइंगल ओ क्यू आर में सेम रेशियो में डिवाइड करती है. दिस लाइन BC, line segment BC divides side OQ and OR of the triangle OQR in the same ratio. That is why by converse of basic proportionality theorem, we can say that BC is parallel to QR and hence proved. That's all. This is also very important. Using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoint points of one midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ये यस, क्वेश्चन में यह है कि ये ट्राइंगल एबीसी है. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और दिस लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी. इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है. बताइए कि ई भी एसी का मिड पॉइंट होगा. ये क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हो. But here we have to do using basic proportionality theorem. So what is given here? In triangle ABC, D is midpoint of AB, or you can write AD is equal to BD. To prove a line parallel to BC intersect AC at E means in the figure DE is parallel to BC. To prove E is the midpoint of AC or AE is equal to EC. Very simple. When a line is in a triangle, when a line is parallel to other side, one side of a triangle, that this line will divide the remaining two sides in the same ratio. So we can say, since D is midpoint of AB, so AD is equal to DB. So AD is equal to, or you can write AD upon BD is equal to 1. Further, in triangle ABC, DE is parallel to BC, it is given. So by using basic proportionality theorem, AD upon BD, that is equal to AE upon EC, because DE is parallel to BC in triangle ABC. So you can write AD upon BD is equal to AE upon CE. But now you will see that AD upon BD is 1 and AD upon BD is AE upon CE. So AE upon CE will be equal to 1. So equation first, we can write 1 is equal to AE अपॉन सीई. यहां पे एडी अपॉन बीडी की जगह आप 1 पुट कर दीजिए. एन ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इज इक्वल टू सीई, और व्हेन ए इज इक्वल टू सीई इट मींस ई इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी. दैट्स ऑल. यही तो प्रूव करना था कि ई मिड पॉइंट ऑफ एसी का. सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, हेंस प्रूव्ड. दैट्स ऑल.
Using converse of basic proportionality theorem, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. किसी भी ट्राइंगल में अगर ये डी मिड पॉइंट ए बी का है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन प्रूव दैट दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी. So what is given in triangle ABC? D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, and we have to prove that DE is parallel to BC. पहला जो प्रूव करना हो तो हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प लेना चाहिए. तो हाउ टू टेक नाउ? सी, प्रूफ इन सिंस D is midpoint of AB, therefore you can write AD is equal to BD, और AD अपॉन BD is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. Similarly, E is midpoint of side AC, so you can write AE is equal to CE. See the figure, or AE upon CE is equal to 1. Here right hand side is same, that is 1, and this is also 1. It means now you can write AD upon BD is equal to AE upon CE from this and from this. Now AD upon BD is equal to AE upon CE. So DE divides AB and AC in the same ratio. So by converse of basic proportionality theorem, DE is parallel to BC, and that's all. A very good question. Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. इस क्वेश्चन को थ्रू फिगर हम विजुलाइज करते हैं. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि diagonals of a trapezium divide in the same ratio. So first we have to draw the figure for it. देखिए AB CD is a trapezium in which AB is parallel to DC, and diagonals AC and diagonal BD intersect at O. We have to prove that AO upon CO is equal to BO upon DO, or on cross multiplication AO upon BO is equal to CO upon DO. ये हमें प्रूव करना है. क्या क्वेश्चन है? डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड इन द सेम रेशियो. This question is very, very important. So given ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect each other at O. ये आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना चाहिए. To prove AO upon BO is equal to CO upon DO. अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. यहां से E पॉइंट से यहां से O से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी OE तक. वो किसके पैरेलल हो? दैट इज पैरेलल टू DC, or that is parallel to BA. So take a point E on AD in such a way that EO is parallel to DC. EO DC के parallel हो, but DC is already parallel to AB, so you can say that is also parallel to AB. तो कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा. ये देखो प्रूफ. और जैसे ही किसी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल दे रखा किसी साइड के पैरेलल हो, वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मींस बीपीटी और थेल्स थ्योरम. इन ट्राइंगल ए डी सी,
This line is parallel to this side. Therefore, by basic proportionality theorem, AE upon ED is equal to AO upon CO. Now, in triangle ABD, see this triangle. This line EO is parallel to AB. So, again using same basic proportionality theorem, AE upon ED is equal to BO upon DO. But here you will see that left hand side is same from first and second. So right hand side will also be same. So you can write from first and second, AO upon CO is equal to BO upon DO. Hence proved. आप चाहो तो इसको इस तरह से बना लीजिए ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और AO upon BO is equal to CO upon DO and hence proved. That's all. मैं BL शर्मा, मैथ्स साहब. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO upon BO that is equal to CO upon DO means if a diagonal of a quadrilateral divides in the same ratio or divides proportionality, then prove that the quadrilateral will be a trapezium. Means one pair of opposite sides will be parallel. Here ABCD is a quadrilateral in which AO upon BO is equal to CO upon TO. And we have to prove that it is a trapezium. Trapezium means we have to prove that AB is parallel to DC. This is very important question. Quadrilateral ABCD where AC and BD intersect at each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. एंड टू प्रूव एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. देखिए, हमें डीई एडी पे कोई ई पॉइंट मार्क करना होगा, उसको वैसे ही हम ज्वाइन करेंगे ओई से, तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए. मींस ईओ इज पैरेलल टू एबी, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. मार्क ए पॉइंट ई और एडी सच दैट ईओ इज पैरेलल टू एबी. एक हमने कंस्ट्रक्शन किया, ईओ किसके पैरेलल होना चाहिए? ये एबी के पैरेलल होना चाहिए. एंड नाउ प्रूफ. इन ट्राइंगल डी ए बी देखिए ये रहा डी ए बी, EO is parallel to AB. So by basic proportionality theorem, DE upon EA is equal to DO upon BO. But also given, what is given? AO upon BO is equal to CO upon DO. It is given. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO. देखिए ये DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO. हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये इक्वल हो जाए, DO अपॉन BO एंड दैट इज ऑल्सो DO अपॉन BO. Now DO upon BO, that is DO upon BO. So DE upon EA will be equal to, mark it second equation. So from first and second, DE upon EA is equal to CO upon AO.
DE upon EA is equal to CO upon AO. इस ट्राइंगल ADC में EO AD और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब जब सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड करती है तो हम अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो देन इन दैट केस EO विल बी पैरेलल टू DC। ये जो EO लाइन है वो DC के पैरेलल हो जाएगी। मीन्स यू कैन से this line, this line, and this line, all these three lines are parallel. It means AB is parallel to DC. EO is parallel to AB, it is given. EO is parallel to DC, it is given. It means AB is parallel to DC. और जैसे ही AB और DC parallel हो जाएगा, that the quadrilateral ABCD will be a trapezium. If one pair opposite side of a quadrilateral is are parallel, then the quadrilateral will be a trapezium. That's all for this question. Thank you.